Good morning, dear students. In this video, we will discuss some important questions of chapter number 1 for 10th class. Let us start. Question number 1 is, write a balanced chemical equation to represent the following reaction. Carbon monoxide reacts with hydrogen gas at 340 atm atmospheric pressure to form methyl alcohol. In this question, we have to write a balanced chemical equation for the given reaction. Now, CO2 plus H2O at 340 atm gives CH3OH which is methyl alcohol. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में बोला गया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन कराई गई है हाइड्रोजन गैस के साथ 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो बनता है मिथाइल अल्कोहल। और इसके लिए हमें रिएक्शन लिखनी थी, रिएक्शन ये रही, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, a shiny brown colored element X on heating in air becomes black in color. Name the element X and the black colored compound formed. Okay, answer is the brown colored element is X, which is copper. On heating in air, it forms copper oxide, which is black in color. Now, reaction is 2Cu plus O2 gives 2CuO. तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे याद रखेंगे कि जो ब्राउन कलर का एलिमेंट X है वो है हमारा कॉपर, और जब इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो बनेगा कॉपर ऑक्साइड विच इज ब्लैक इन कलर। लेट अस मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर? आंसर इज, it is done to remove the layers of magnesium oxide and magnesium carbonate from the surface of magnesium ribbon. These layers are formed as a result of reaction with atmospheric oxygen and carbon dioxide. Magnesium ribbon is cleaned by rubbing with sandpaper, after which magnesium ribbon burns smoothly. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में पूछा गया था कि मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करने से पहले हम क्लीन क्यों करते हैं। तो हम इसको क्लीन इसलिए करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर बनी होती है, और उस लेयर को साफ करने के लिए हम उसको सैंडपेपर से क्लियर करते हैं, जिससे कि मैग्नीशियम रिबन अच्छे से बर्न हो सके। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। फर्स्ट पार्ट इज, name the substance X and write its formula. Second part is, write the reaction of the substance X named in part 1 above with water. The answer is, the substance X is used for white washing is calcium oxide. तो बच्चे आप याद करेंगे रखेंगे कि जो X है वो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, जो कि वाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कि हम क्विक लाइम भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है CaO, calcium oxide. Now, reaction of calcium oxide with water is CaO plus H2O gives CaOH whole twice. मीन्स जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और ये रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है। रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होगी, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, why is respiration considered as an exothermic reaction? Explain. In this question, we have to explain why respiration is considered as an exothermic reaction. Okay, during a respiration, we inhale oxygen from the atmosphere, which reacts with glucose in our body to produce carbon dioxide and water, and also produce energy, because energy is produced in the process of respiration. Therefore, respiration is considered as an exothermic reaction. The reaction is C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O plus energy. Because during the process of respiration, energy is released, energy is formed. Therefore, this respiration reaction is considered as an exothermic reaction. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि रेस्पायरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों मानते हैं या क्यों कह सकते हैं। तो क्योंकि रेस्पायरेशन में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, जो कि हमारे शरीर के अंदर
ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाता है और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और क्योंकि इस रिएक्शन में, इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी फॉर्म होती है, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज a small amount of ferrous sulfate were heated in a hard glass test tube. Write the equations involved in the reaction. The part second is what type of reaction is taking place. Now student, what you can do, you can pause the video and note down the questions with answers in your notebook so that you can revise or learn them. Okay, the answer is what we have to do. Ferrous sulfate reacted, heated. So ferrous sulfate by heating gives Fe2O3 ferric oxide, SO2 sulfur dioxide, SO3 sulfur trioxide. मीन्स फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो वो फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटेगा। तो ये आप देख सकते हैं कैसी रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। थर्मल इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमने हीट का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे ना रिएक्टेंट इज 1 बट प्रोडक्ट आर मोर देन 1 or 2. Here are 3 products formed. Therefore, this reaction is decomposition reaction or thermal decomposition. Let us move on. Question number 7. When potassium iodide solution is added to a solution of lead nitrate in a test tube, a precipitate is formed. First part is what is the color of this precipitate. Second is name the compound precipitated. Third part is write the balanced chemical equation for the reaction. And last part is what type of reaction is this. Now answer is what we have to do. Potassium iodide solution is added to a solution of lead nitrate. Means PbNO3 whole twice, this is lead nitrate, plus 2 Ki potassium iodide. By reacting they form PbI2 potassium iodide, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे लेड नाइट्रेट की रिएक्शन हुई है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो हमारा उसके रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा। और ये आप देख सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बिकॉज द रिएक्टेंट्स एक्सचेंज देयर आयंस, देयरफॉर द रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट इज येलो, द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड इज लेड आयोडाइड। You can remember this, lead iodide is precipitated in this reaction and the color of precipitate is yellow. Question number 8 is when a green compound is heated strongly, its color changes to black and odor of burning sulfur is given out. First part is name the compound, second part is state the type of reaction, third part is write the chemical equation involved. Now the green compound is FeSO4 ferrous sulfate and the reaction is 2FeSO4. When we heated it, it gives Fe2O3 SO2 SO3. This is the same reaction which we have discussed earlier in this video. Now you can remember the color of FeSO4 is green. तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे फेरस सल्फेट FeSO4 का कलर ग्रीन है और जब इसको हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड ये गैसेस हमें मिलती हैं, SO2 एंड SO3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अ वाइट कंपाउंड ऑन हीटिंग डिकम्पोज टू गिव ब्राउन फ्यूम्स एंड अ येलो रेसिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड। नेम द कंपाउंड, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन स्टेटिंग इट्स टाइप। Now the compound is lead nitrate PbNO3 and reaction is 2 PbNO3. When we heat it, it gives 2 PbO plus 4 NO2 plus O2. This NO2 is brown gas and lead oxide PbO is a yellow residue. Student, you can remember the white compound is lead nitrate. After heating it, we get a yellow residue which is lead oxide and brown gas is NO2. Next question is 10th question. A light sensitive compound X of silver is used in black and white photography. On exposure to sunlight,
its color changes to gray. First part is we have to identify X. Second part is we have to write a chemical equation to express the above change. And third part is identify the type of chemical reaction. The answer is the element X is silver bromide. We have to remember this. The X element which is used in black and white photography is silver bromide AgBr. And the reaction is 2AgBr in the presence of sunlight gives 2Ag plus Br2. Means it is photolytic decomposition. After photolytic decomposition of AgBr, we get Ag silver, Br2 means bromine gas. So silver and bromine gas we will get. Now this is a photochemical decomposition reaction. Let us move on next question. Question number 11. Why do we store silver chloride in dark colored bottles? Explain. Answer is silver chloride on exposure to sunlight decomposes according to the following reaction. AgCl in the presence of sunlight after thermal decomposition, photolytic decomposition gives Ag silver Cl2 chlorine gas. That is why silver bromide is kept in dark colored bottles. We kept silver chloride in dark colored bottles because if we put it in any other container, then it can expose to sunlight, and after exposing to sunlight it will decompose into silver and chlorine. Therefore we have to kept it in dark colored bottles. The next question is A, B, C are three elements which undergo chemical reaction according to the following reaction. There are three reactions given in the question. You have to answer the following questions with reasons. A part is which element is most reactive, B part is which element is least reactive, and third part is what type of reactions listed above. Okay, we can see in reaction number first, A2O3 plus 2B gives B2O3 to A, means B displaces A in first reaction, means B is more reactive than A. In second reaction, B displaces C. We can see the compound was CSO4. After reacting B, it becomes B2SO4 whole thrice. That is, B displaces C from its compound. It means B is more reactive than A and C. That's why we can say that B is most reactive element. Now, in reaction third, we can see A displaces C from its compound, and B also displaces C in second reaction. Therefore, C is least reactive than A and B. We can say that C is least reactive. Means answer of part first is B, answer of part second is C, and these reactions are displacement reactions because in these reactions an element displaces other element from their salt or compound. तो बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं. इन रिएक्शंस में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके यौगिक या उसके कंपाउंड या सोल्ट से उसको डिस्प्लेस कर रहा है, और हमने देखा कि बी ए को तथा सी को दोनों को डिस्प्लेस करता है, इसलिए बी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो गया. और यहाँ पे हम देख सकते हैं सी को ए ने भी डिस्प्लेस किया और सी को बी ने भी डिस्प्लेस किया, इसलिए हम कह सकते हैं सी दोनों से कम रिएक्टिव है, मीन्स सी इज लीस्ट रिएक्टिव. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इज in electrolysis of water, name the gas collected at the cathode and the anode. Why is the volume of gas collected at one electrode is double of the other? Third part is why are few drops of this diluted H2SO4 added to the water? Student, this is the most important question. Now, in the process of electrolysis of water, electric current is passed through water acidulated with sulfuric acid. First part, the gas collected over the cathode is hydrogen and the gas collected over anode is oxygen. Okay students, you have to remember this. The gas collected over cathode is hydrogen, means cathode is at hydrogen is at cathode, and the gas collected over anode is oxygen, means oxygen is at anode. तो कैथोड हाइड्रोजन, एनोड पर ऑक्सीजन.
Second part, the volume of gas collected over the cathode, that is H2 gas, is double the volume of the gas collected over the anode, that is O2 gas. This can be explained with the help of chemical reaction takes place. Okay, 2H2O, by passing electricity we get 2H2 plus O2. In this reaction we can see that the molecules of hydrogen gas is 2 and the molecule of oxygen gas is 1 after the electrolysis of water. Therefore, volume of gas is proportional to the number of molecules of hydrogen and oxygen indicated in the balanced equation. There are 2 molecules of H and are 1 molecule of O in the balanced equation. Hence, hydrogen collected has twice the volume of oxygen collected. Third part is, why are few drops of dilute H2SO4 added to the water? Because pure water does not conduct electricity. A few drops of H2SO4 is added to make water conducting. Next question is, an equation of metal nitrate P reacts with sodium bromide solution to form yellow precipitate compound Q, which is used in photography. Q on exposure to sunlight undergoes decomposition reaction to form metal present in along with a reddish brown gas. We have to identify P and Q. We have to write a balanced chemical equation. We have to list 2 categories in which this reaction can be placed. Now, first part is, P is silver nitrate AgNO3 and Q is silver bromide AgBr. What is P? It is silver nitrate. By reacting with sodium bromide, it forms yellow precipitate, which is compound Q, and compound Q is silver bromide. Okay, when silver bromide is exposed to sunlight, it gives silver and bromine gas, and this reaction is decomposition reaction, or we can say that photochemical reaction or photo decomposition reaction. Next question is, what change do you observe when you add zinc to a solution of copper sulfate? Second part is, you add Pb, that is lead, to a solution of cupric chloride. We have to write balanced equations, and in B part we have to complete these reactions. Now in A part, blue color of copper sulfate disappears because when we add zinc to copper sulfate, which is of blue color, zinc displaces copper from copper sulfate and we get zinc sulfate with copper. तो इस रिएक्शन में जिंक कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, इसलिए कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा. ग्रीन कलर ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड disappears because when lead react with cupric chloride, then it will form lead chloride and displaces copper from its salt. जो आप देख सकते हैं इस वाले रिएक्शन में क्या हुआ, कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर डिसअपियर हो गया क्योंकि जिंक ने कॉपर को उसके सॉल्ट से डिस्प्लेस कर दिया. सेकंड रिएक्शन में क्यूप्रिक क्लोराइड का जो ग्रीन कलर है वो डिसअपियर हुआ है क्योंकि लेड ने कॉपर को क्यूप्रिक क्लोराइड से अलग कर दिया और लेड क्लोराइड बनाया है. तो ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब बी पार्ट की हम बात कर रहे हैं. यहाँ पे हमें कुछ रिएक्शंस दी गई हैं, हमें इन रिएक्शंस को कंप्लीट करना था और फिर उसको बैलेंस भी करना था. तो यहाँ पे आप रिएक्शंस देख सकते हैं, हमने कंप्लीट करके और बैलेंस करके आपके सामने लिखा हुआ है. जैसे फर्स्ट रिएक्शन में अगर हम देखें HgCl2 2Ki, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों अपने आयन्स एक्सचेंज करेंगे, ये हमारा हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सेकंड में आप देख सकते हैं 2Al Cr2O3, तो यहाँ पे बनेगा Al2O3 प्लस 2Cr, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, Al ने Cr को डिस्प्लेस किया. CuSO4 प्लस H2S, दिस इज ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन because reactants exchange their ions. Now this one is thermal decomposition reaction because after heating this compound we get 1 2 3 products. Okay, so students, these were the important questions of chapter number 1 which we have discussed in the video. What you have to do, you have to pause the video and note down all the questions with answers in your notebook and learn them. स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और इनको याद करेंगे.
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।